Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So what I'm saying is that we want to understand this physical address calculation today. So I said, what is the Tanzila Farooq? What is the word size of your processor? 8086. जी sir. What is the word size of your 8086? 16 bit. It is 16 bits. All the registers are 16 bits. Data bus is 16 bit, and someone other than Obed will tell me how big is our data bus. 16 bits. How big is 16. our address bus? 20 bit. So why is it 20 bit? And what we do here is to have a bigger memory. And I am making you understand that if we have only 2 bits, okay, in our data or in our address, for example, say you have a memory, right? Memory has some locations, and you are putting data in those locations, right? And you have to address them. Now, if you have only 1 bit, say for example you have only 1 bit, how long can be your memory? You can have only 2 bits memory, because you say zero, you can name 0 this and 1 this, because you have to address it, no? Right? If we have the 4 places, I can name this as 0 0 0 1 1 0 and 1 1. I cannot have the next place in this. I can't have, because my bits are only 2. To name the next one, it is gonna be it is gonna be how much? 3. What is 0 1 2 3 and 4? What is 4? 4 is 1 0 0. So for that we need 3 bits. And if I am having only 2 bits, can I address this guy? No, I can't. So I can have only how many locations? I may have only 4 locations. Now, if I have to have more locations, then I need to increase the bits. Say for example 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Now I can have this much of memory, wherein I have 8 locations. But if I need to have an 8 locations, the bits I need for addressing them is 3, right? Getting? Yes sir. Now if I have 4, tell me, if I have 4 bits, that means if I have 4 bits, that will land from 0 0 0 up to 1 1 1 1. This is 15. So I can have from 0 to 15, that is 16 locations. So I can have a memory of 16 locations. Right or wrong? Right. So if I have a 16 bit, if I have a 16 bits now in my addressing, if I have, for example, I said I have I have 2 bits only, so I can have 2 raised power 2, that is 4 locations. If I have 3 bits, I said I have 2 raised power 3, that is 8 locations. If I have only 1 bit, that is 2 raised power 1, that is 2 locations only, right? Right? If I have only 1 bit, the maximum locations I have 2 raised power 1. If I have 2 bits, I can have 2 raised power 2, that is 4 locations, 1 2 3 4. If I have 3 bits, the maximum I can have 2 raised power 3, that is 8 locations, right? Similarly, if I have 16 bits, how many locations I can have? 2 raised to power 4. If I have 16 locations, na? If I have 16 bits, Okay. 2 raised. This was 60. that is 64k. That is 64k. So maximum size I can have 64k. That means if your bits are only 16 bits, the maximum you can address is 64k. That means your memory can be only 64k long. But I want to have a more memory, and I can do that. How? If I have 20 bits for addressing, I'm saying if I have 20 bits, so what is the maximum I can have locations in my memory? 2 raised power, 20. that is 1 megabyte. But now the catch is, on one side my registers are only 16 bit. Okay, for 20 bits you need to have a 20 bit to store that address. You need to have a 20 bits, but I can't store it because I am only having 16 bits. Let me simplify it. I am saying that I need 3 bits to address, that is 2 raised power 3, that is 8 locations. I am having 8 locations, but my register size is only 2. So if the addressing is 111,
But here I have only 2 bits. Can I store 2 bits here? 3 bits here? No. No, sir. I can't store. Then how can I address the 3 bits memory? I have a trick. I will do what? Say for example, if I have only 2 bits in my registers are only 2 bit long. My registers are only 2 bit long, and the minimum value can be 00 and maximum value can be 99, right? Okay, but I am having 3 bits in address. That is, it starts from 000 up to 1 up to 999, if decimal I am talking about. 999, right? So I can have around 1000 locations. But if I have 2 bits, I can have only 100 locations in my memory, right? From 0 to 100. That is 0 to 99, that is 100 locations. ठीक है ना? Including 0. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइक खोल के रखो. But if I have 3 bits, मैं कह रहा हूं कि एक साइड मेरे रजिस्टर्स 2 ही बिट है, लेकिन मेरी मेमोरी जो है वो फ्रॉम 000 अप टू 999 स्टोर करती है. अभी कैसे पॉसिबल है ना? Now how is it possible? Because I can have here 00, I can have here 11, I can have here 22, I can have here 33, the maximum I can have here is 99, but I cannot accommodate 999 because अगर मुझे एड्रेस 999 करना है तो कहीं तो स्टोर करना है ना पहले, तो वो तो मेरे पास जगह ही नहीं है. मेरे पास तो 16 बिट्स की रजिस्टर्स ही है वहाँ पे, और इस केस में मेरे पास 2 ही बिट्स की रजिस्टर्स हैं. सो हाउ विल आई गोइंग टू एड्रेस दिस थिंग? सो मैं एक ट्रिक करता हूँ. मैं क्या करता हूँ? एक ट्रिक. मैं कहता हूँ कि अगर ये 00 है यहाँ पे, या ये 10 है, या ये 20 है, या ये 30 है, या 40 है, ठीक है? आई डिवाइड दिस मेमोरी इंटू 10 बिट्स लॉन्ग. मैं 10 की इसमें गैप रखूंगा. कितनी? 10 की नहीं 10 की नहीं, 100 की, क्योंकि मेरे पास 2 बिट्स है ना, 99, 0 to 99 आई कैन कैलकुलेट. मैं यहाँ पे 100 बिट्स की गैप रखूंगा. मैं रखूंगा ये हो गया 0 to 100. दिस इज जो इसके बाद है, दिस इज 0 to 99. ओके, एंड जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 99 ऑनवर्ड्स अप टू 199, है ना? Then next starts from 299 and so this will be from 1 this was 99 and this will start from 100, right? 100 to 199. Now this will be 200 to 299, and then next segment will be from 300 to 399. Next segment will be 400 to 499, right? And the last segment we will have is 800 to 900 to 999 will be the last segment, right? ठीक है? Now what I will do is, but what addressing I can have here? I can have address here 00, right? If I append 0 to this, if I append, I'm having address 00 because I'm having only 2 bits. See? Eraser. I'm having on this side only 2 bits. I'm having only 2 bits in the space. So I can have here 00. But I am saying if your segment address is 00, multiply it with 10, it becomes 000. Actually append 0 to it. Okay, we do the hexadecimal math. Then add the offset, because this is 000. First segment is 000 up to 99. Say your, for example, is at 80. From 00, this was 0, 1, 2 up to 80. The instruction is 80. So this 80 will be my offset. So I am doing in the register, I am holding only 00 and I am appending 0 to it by multiplying with 10h. So h means hexadecimal. So keep it as 000 and add the offset, that is 80. So this will be 080. Right now it will be 080. So this is this guy. Now say for example I have here, it again starts from 1, 2, 3, 4 up to something and 80. Actually my location is 180. Address is actually how much? 180. So because segment starts from 100, okay,
and then 101, 102, 103, 104, and 180, right? But in my register, because I have only 2 bits, I have only how much? 2 bits. Can I store the address of 180? No, I cannot store the 180 because I have only 2 bits. What I will store here is only 10. I will store here is only what? 10. Okay. When I calculate the physical address, I will say what is in the segment register. I say segment register is 10. Multiply it with 10h. That means append 0 in the back. So it becomes 100 automatically. It becomes 100 this guy. And add this 80 to it. Now answer becomes 180. That's actual exactly your physical address. Getting? Say now your segment, your address is in the next segment. That is here. That is here. So segment starts from 200. Okay, and the offset is say for example at 90. My location 9 because it starts from 200. This is 201. I write it to 1, 2, 3, and 90 and so on up to 99. Okay, that will be my offset. What will be stored in the, can I store 2, because my instruction is at now 290. I cannot store this in my memory because I have only 2 bits, but I can store 29 here. Okay, say for this was as 92 at 92. So 292 I want to fetch, address calculate. But in my addressing I will have only how much? 20? 2 bits. 29 only. But I have a trick. Multiply 29 with 10. Make it 290. Then add the offset of 92 to make, what was, this will be 20 actually. Because 20 means the 200. So 20 into 10, this is 200. Because base address, I want the base address firstly. Base address will be in the memory. Base address is 20. 20 means actually 200. How I calculate it? Multiply it with 10. Multiply it with, because in the register I will have the base address. The base address right now will be 20. In fact, it is 200. But I calculate that. I will say 220 into 10. That is 200. And plus it with what? Offset. जहाँ पे आपकी instruction है, that is 92. So total is 292. And that is the address of this memory location. So even though I have only 2 bits, क्योंकि अगर मेरे पास 2 bits ही हैं, the maximum memory I can have is only जो एक segment का size था. जो ये एक segment का size है, that is 0 up to 99. I can have only that thing, 0 up to 99, right? Because my 2 bits can accommodate only this much of memory. You getting the point what I'm saying? So therefore, if you have the same logic, I will say I have the 16 bits in my registers, but the memory I am having is of 20 to raised power 20. That is 1 megabyte, right? That is 1 megabyte divided into segments, and the segment size can be only जो मैं कर सकता हूँ, that is 16, 2 to the power 16, that is 64k. The segment size will be 64k. Okay, so if I have to calculate the address, then whatever is here I multiply it with what will be here. Here will be the base address of the segments, right? जो हम बता रहे कल जो बेस एड्रेस होगा वो यहाँ पे होगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10h. जो सेगमेंट एड्रेस आपके पास है, जो सेगमेंट के अंदर होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10h और उस चीज को प्लस क्या करेंगे? Offset. And we get the physical address. Hope you are getting the point. Now let us see this. Hope you are getting it. Memory segmentation of physical address calculation. So total memory जो हमारी है उसको हमने डिवाइड किया किन में? सेगमेंट्स में, राइट? और सेगमेंट क्या है? वो मेमोरी का एक हिस्सा है, बस और कुछ नहीं है ना. लेकिन मेमोरी में स्टोर डेटा होता है बाइट्स में, और हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ कोड है? 20 लाइंस है ना. सो अगर मेरे पास 20 लाइन एड्रेस बस है, यू ओपन अप द माइक्स, एवरीबडी स्पीक, एवरीबडी विल हैव ओपन माइक एंड स्पीक व्हेन आई आस्क. हमारे पास एड्रेस बस है वो 20 लाइंस की है कि नहीं? सो दैट मैक्सिमम एड्रेस आई कैन हैव इज 2 to the power 20, जो मैं अभी बता चुका हूँ. दैट इज दिस मच ऑफ बाइट्स, दैट इज 1 megabyte. दैट्स व्हाट
1 megabyte. सो हमारा एड्रेसिंग जो होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0000 अप टू एफ 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 एफ. रिमेंबर दिस इज हेक्साडेसिमल. ईच डिजिट हैज 4 बाइनरी. This 0 is actually 4 times 0. This 0 is 4 times 0. This f is 4 times 1. F means 1, 1, 1, 15. F means what? Hexadecimal 15. Getting what I'm saying? So this is actually 1, 1, 1, 1. Then F is again 1, 1, 1. So it's all ones. So that means our memory will be how many? 1 megabyte long. लेकिन जो मेरी ये है, तो जो आपने सेगमेंट्स बनाए, वेट ए सेकेंड, तो इसमें हमने जो सेगमेंट बनाए अलग अलग किस्म के हैं. कौन कौन सा होगा? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट. ये सेगमेंट कहाँ पे बनाए हमने? ये किस में बनाए हमने? सेगमेंट्स कहाँ बनाए? मेमोरी. मेमोरी के अंदर. मेमोरी के अंदर है ना? यस. आई एम गिविंग क्लास, गो आउट. ओके. यस सर. Each of the segments is addressed by an address stored in corresponding segment register. इन सब सेगमेंट का कहाँ पे एड्रेस होगा? corresponding registers. सेगमेंट रजिस्टर्स में. हमारे पास कौन से सेगमेंट रजिस्टर्स हैं? कोड. ये है ना, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट. इनमें कौन सा एड्रेस होगा? इट विल बी द बेस एड्रेस. बेस एड्रेस, राइट? लेकिन क्या हमारे सेगमेंट रजिस्टर 20 बिट स्टोर कर सकते हैं, 20 बिट स्टोर कर सकते हैं? ना. वो कितने बिट करेंगे स्टोर? 16. लेकिन हमारे पास ट्रिक है जो मैंने अभी दिखाई आपको. वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 10 टू गेट द बेस एड्रेस ऑफ द एक्चुअल सेगमेंट. अभी बताया था मैंने, ठीक है? यस सर. देखिए ये कोड सेगमेंट है, इसका बेस एड्रेस कोड रजिस्टर सेगमेंट रजिस्टर में है. ये यहाँ से मेमोरी है. डेटा सेगमेंट का डेटा सेगमेंट में, जो डेटा सेगमेंट सेकेंड है. इसी तरह से स्टैक सेगमेंट एंड सो ऑन. सो फिर ये 20 बिट का एड्रेस जो हमारे पास है वो 16 बिट की रजिस्टर में कैसे आएगा, है ना? वो कैसे आएगा? क्योंकि जो आपके रजिस्टर्स में है वो लॉजिकल एड्रेस है, वो असली फिजिकल एड्रेस नहीं है. वो असली एड्रेस नहीं है, वो वर्चुअल एड्रेस है. हम एज्यूम करते हैं ये एड्रेस है, असल में वो है नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसीलिए हम यहाँ पे वो कैलकुलेट करते हैं. ये सर्किटरी जो आपके पास ये लगी है, ये वाली सर्किटरी, ये एक्चुअली कैलकुलेट करती है हमारी फिजिकल एड्रेस. क्योंकि जो कोड सेगमेंट में है वो क्या है? लॉजिकल एड्रेस. ठीक है? तो कैसे करेंगे हम? जैसे आपके डेटा सेगमेंट में रजिस्टर में है 2222, ठीक है? हमारे पास है 222, 4 times 2. और ये रह सकता, क्योंकि 16 बिट लॉन्ग मेरी रजिस्टर है. बिकॉज आई एम टोल्ड यू ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इज एक्चुअली 4 बाइनरी डिजिट्स. ठीक है? सो इफ इट इज 2, अगर ये 4 डिजिट्स हैं, 4 times 4 is 16. सो दिस इज 16 बिट लॉन्ग. सो डेटा सेगमेंट कैन हैव एड्रेस 2222. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 20 बिट में हम क्या करते हैं? हम इसको 0 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको सीधे लास्ट में 4 zeros लगाएंगे. सो अगर आपका यहाँ पे स्क्रीन राइटर था मेरे पास कहीं पर, लेट मी सी इफ आई हैव इट समवेयर. क्या नाम था उसका स्क्रीन राइटर का? स्क्रीन ब्रश. इज इट कमिंग? Screen brush, here it is. Okay, so what I am saying is you have the 2222, right? Basically each digit carries 4 bits. So 2 बाइनरी में 2 क्या होता है? बाइनरी में 2 होता है 0 0 1 0. So this guy is actually, this 2 is actually 0 0 1 0. So everyone is 0 0 1 0. All these 2s are 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, and total it is 16 bit long, because each digit is 4 bit long. So if it is 4 digits, 4 times 4 is 16. So it is 16 bits. लेकिन जो आपकी मेमोरी के अंदर जो ये आपका बेस एड्रेस जो होगा, it will not be 2222, it will be 2220, right? 5 इसमें 0 पीछे से लगाओ, वो आपका बेस एड्रेस होगा. सो वही कैलकुलेट, हमने सेगमेंट बनाया हुआ है, इसका एड्रेस है 2220. ठीक है? यू गेटिंग माई पॉइंट?
Yes, sir. So how will you Sir. get it? How will you get that base address? क्योंकि आपकी जो सेगमेंट रजिस्टर है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, इट कैन होल्ड ओनली 16 बिट्स. लेकिन यहाँ से जो मेमोरी है उसका जो सेगमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2220. So I can calculate it, no problem. How? By multiplying it what? 0h. And to 10. make it 2220. ये जो एड्रेस है ये आपका असली सेगमेंट एड्रेस है, बेस एड्रेस. लेकिन आप होल्ड क्या करते हो, ये है ना. क्यों क्यों आप इतना ही होल्ड क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास 16 बिट्स ही है, आपके रजिस्टर में 16 बिट्स हैं, लेकिन ये 5 है, 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5, and each digit is 4-bit binary because this is hexadecimal. So that means 5 times 4 is how much? 20. So it is 20-bit long. This guy is 20-bit long. ठीक हो गया? समझ में आ रहा है? Yes. और इस चीज को हमें क्या ऐड करना है? हाँ जी, offset. We have to add offset to it, right? Hide screen brush. So here, if the data at any location of logical address, अगर इसका logical address ये है 2222, okay, और offset है 0016, say 16 इसका offset है. So how I will calculate address? I will multiply it with the 10, make it 2220 and add then this 16, right? समझ आ रहा है? So Yes, अगर sir. so effective address will be starting address of the base segment plus offset. So how you do it? You have 2222, multiply it with the 0 or append 0 to it and add this 16 to it. So this will be 6, 2 plus 1 is 3. So address will be 22236. You getting how we got the 22236? How we got this 22236? Because the data segment में हमारे पास 4 bits थे, hexadecimal, that is 16-bit binary. अब इस लेकिन base address of the data segment will it be 2222 or 22220? 2220. That is 5 bits. So how I can do it is, how I will do it? I will multiply this guy with the 10h and then add the offset to get 22236. Right? Any confusions in this? No, sir. So जितने भी ऑफसेट्स होंगे वो 16 बिट्स के ही साइज के होंगे, यानी कि मैक्सिमम आपको 2 to the power 16 64 KB या 65535 आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज होगा. जो ऑफसेट पहला होगा वो होगा 000 अप टू FFF, यानी कि जो हमारा ये साइज जो ये होगा हमारे पास सेगमेंट का साइज जो होगा, जो हमारा सेगमेंट का साइज होने वाला है, एक सेगमेंट का साइज होगा, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0000 टू FFFF, बिकॉज हमारे पास 16 बिट्स ही है विच कैन स्टोर द ऑफसेट, क्योंकि मेरा IP जो है वो ऑफसेट स्टोर करेगा. सो वो खुद 16 बिट लॉन्ग है, तो इसलिए मेरा जो सेगमेंट का मैक्सिमम साइज है इट इज लिमिटेड टू दिस गाय ओनली, 16 गाय. सो आई कैन हैव द ऑफसेट, मैक्सिमम ऑफसेट आई कैन हैव इज 2 raised power 16, that is 64K, okay, or 65535, or in hexadecimal we can write it from 0000, 4 digits का, and maximum is FFFF in hexadecimal, because hexadecimal if you have forgot is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट्स हमारे पास डेसिमल में होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल उसके बाद क्या होता है A B C D E and F, यानी कि A आपका 10 है, B 11 है, C 12, 13 14 एंड F क्या है आपका 15. ठीक है, दिस इज हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल में हम ऐसे लिखते हैं, मैं इसमें बाद में और बात करूंगा हेक्साडेसिमल की, बिकॉज वी नीड दिस थिंग. ये समझ में आ गया आपको? यस सर. अब ऑफसेट्स मैंने आपको कहा था कि नहीं, 1 सेकेंड, मैंने आपको कहा कि कोड सेगमेंट जो आपका होगा मेमोरी का, उसका ऑफसेट किस में है? IP में. लेकिन स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट कहाँ है, डेटा सेगमेंट का ऑफसेट कहाँ है, एक्स्ट्रा सेगमेंट का ऑफसेट क्या है? क्योंकि ये जो सेगमेंट्स आपके पास होंगे, अगर आपके पास, मैंने कहा आपके पास 4 सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना, आपके पास ये कोड सेगमेंट है, दूसरा डेटा सेगमेंट है, फिर स्टैक सेगमेंट है, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट है, लेकिन कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस हमारे पास कोड सेगमेंट रजिस्टर में होगा.
विच इज पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस। डेटा सेगमेंट का जो बेस एड्रेस होगा वो डेटा सेगमेंट रजिस्टर में होगा। स्टैक सेगमेंट का जो एड्रेस है दैट विल बी इन द स्टैक सेगमेंट, और एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो होगा वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में होगा, लेकिन ये बेस एड्रेस होगा। लेकिन हम बेस एड्रेस पर थोड़ी ना काम करेंगे, हम तो किसी इंस्ट्रक्शन में काम करेंगे जो बीच में है। सो दैट इज द ऑफसेट, दैट इज व्हाट ऑफसेट। तो हमें ज़रूरी ऑफसेट चाहिए। और कोड सेगमेंट का ऑफसेट हमने कहा किस में है, आईपी। और बाकियों का भी तो आप ऑफसेट चाहिए ना। डेटा सेगमेंट में आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ये डेटा सेगमेंट आपका है, आप मान लो यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्टैक सेगमेंट में इधर पहुंचे हैं आप, एक्स्ट्रा सेगमेंट इधर पहुंचे हैं, तो वी नीड ऑफसेट इन एवरीवेयर, राइट। वी डू नॉट नीड ओनली द बेस एड्रेस, वी ऑल्सो नीड द ऑफसेट। तो उसी के लिए हम बता रहे हैं कि अगर आपको ऑफसेट चाहिए बाकियों का, जैसे कोड सेगमेंट था उसका ऑफसेट किस में है, आईपी में, ओनली आईपी। लेकिन जो आपका डेटा सेगमेंट है उसका ऑफसेट है हमारे पास बीएक्स में हो सकता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स में हो सकता है, या सोर्स इंडेक्स में हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो बीएक्स रजिस्टर आपको दिख रही है, बीएक्स रजिस्टर जिसकी बात हम कल करेंगे, ये सोर्स इंडेक्स, ये बेस पॉइंटर है, सोर्स इंडेक्स एंड ये देखिए आप, सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये वाले जो है डेस्टिनेशन और सोर्स इंडेक्स, इसमें आपका ऑफसेट है किसके लिए, डेटा डेटा सेगमेंट के लिए। जो स्टैक सेगमेंट है उसका पहले स्टैक पॉइंटर में हो सकता है ऑफसेट, या बेस पॉइंटर में भी हो सकता है, ये याद रखना है आपको। इसी तरह से एक्स्ट्रा सेगमेंट अगर आपके पास है उसका ऑफसेट हो सकता है बीएक्स में, या डेस्टिनेशन इंडेक्स में, या सोर्स इंडेक्स में। यानी कि जो डेटा सेगमेंट आपने देखा उसमें भी डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड सोर्स इंडेक्स और बीएक्स रजिस्टर, ईएस का भी इनमें ऑफसेट हो सकता है सेम, बीएक्स डी आई एस आई, बीएक्स डी आई एस आई। व्हाट इज डी आई, डेस्टिनेशन इंडेक्स, व्हाट इज एस आई, सोर्स इंडेक्स। अब आप कहोगे ये कब होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एरे की जरूरत है, एरे में इंडेक्सिंग चाहिए, ठीक है, कोई वेरिएबल है वो कहाँ पे है, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस वी हैव द ऑफसेट्स व्हिच वी सी लेटर। लेकिन आपको ये टेबल आज याद करना है, मैं कल आपको पूछूंगा। फिलहाल कोड सेगमेंट का ऑफसेट कहाँ पे है, आईपी डेस्टिनेशन डेटा सेगमेंट का बीएक्स या तो बीएक्स में होगा, या डेस्टिनेशन इंडेक्स में होगा, या तो सोर्स इंडेक्स में होगा। आपका डीएस एंड ईएस वो सेम ही है, ठीक है, ओके। और स्टैक सेगमेंट का कहाँ पे है, या तो स्टैक पॉइंटर में या तो बेस पॉइंटर में, ठीक है। इसको आज आप याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। हमारा क्लास कितने बजे तक होता है, 11:10। वी आर डन विद द क्लास, यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्लास, ओके। आपको ये समझ आया पूरे नाउ? अगर आपको ये समझ आ गया, टुमारो विल गो फॉर न्यूमेरिकल्स एंड यू शुड बी एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ, ठीक है ना। सो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, until then, ma salama.